हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ शालिनी अग्रवाल एंड वेलकम टू मार्केट डेस्क वेल्थ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स और साथ ही हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे एंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। Now it has to cross and hold above 21,500 zones for an up move towards 21,650 and 21,750 zones, while on the downside supports are placed at 21,250 and 21,100 zones. तो चलिए अब देखते हैं 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 7 to 10 days। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे। DLF Q3 results. Net profit rises 27% to rupees 656 crore on sustained housing demand. DLF Limited on Wednesday reported a 27% increase in consolidated net profit to rupees 655.71 crore in the December quarter on higher income and less expenses. Its net profit stood at rupees 517.94 crore in the year ago period. Total consolidated income rose to rupees 1,643.51 crore in the October to December quarter of the 23-24 fiscal from rupees 1,559.66 crore in the corresponding previous period of the previous year, according to a regulatory filing. Tata Steel swings to profit in Q3 on strong India demand. Tata Steel on January 24 swung to a consolidated net profit of rupees 522.14 crore in the October to December quarter from a net loss of rupees 2501.95 crores in the same quarter of the previous year, helped by robust domestic demand offsetting weakness in Europe. The company had reported a net loss of rupees 6,511.16 crore in the second quarter due to impairment charges. The consolidated revenue from operations for the Tata Group company during the October to December quarter fell 3% to rupees 55,311.9 crore compared to rupees 57,083.56 crore recorded in the year ago period. On a sequential basis, consolidated revenue from operations declined 0.7% from rupees 55,681.93 crore in the previous quarter. Tech Mahindra Q3 results. For the fiscal year 23-24, revenue at rupees 13,101 crores, up 1.8% quarter on quarter. Tech Mahindra Limited, a specialist in digital transformation, consulting and business re-engineering services, today announced the audited consolidated financial result for its quarter ended 31st December 2023. Revenue at rupees 13,101 crores, up 1.8% quarter on quarter, down 4.6% year on year. EBITDA at rupees 1,146 crores, up 6.9% quarter on quarter, down 46.5% year on year. Consolidated PAT at rupees 510 crores, up 3.4% quarter on quarter, down 60.6% year on year. Earnings per share at rupees 5.8. आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग मार्केट डेस्क। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।